Good evening and welcome to Breaking Views. I'm Sanket Upadhyay. This is a show where we put the facts in perspective and get you all the opinion so that you always get the complete picture. Remember, all the opinion is very, very important. Two stories that we are tracking right here. Story number one is the free fall of the Indian rupee. It has been a subject matter of great memes today across the day. You have had Prime Minister's old comments being dug out and played out today as a reminder that look, you used to make fun of the previous government of the UPA 2 of the falling value of the rupee. What will you say now? Well, a political argument is definitely on. But what does it actually mean for the economy? So that political blame game, but in a perspective, will be up in just a short moment. Also on the show, the Ranas have now reached the national capital. They were out on bail. There were some bail conditions that they will not speak to the media, that they will not talk about certain issues. It seems that the Ranas have decided that defiance is going to be their strategy from here. We are talking about Navneet Rana and Ravi Rana, who were sent to jail for Hanuman Chalisa and the entire controversy in Mumbai. Now they're in Delhi. They're expected to be here for a week. They're expected to meet all tall leaders in the central government. They met Om Birla, the Lok Sabha speaker. Navneet Rana is going to use her privilege as a member of parliament to register a complaint, and that activity has been initiated. What explains the defiance of the Ranas? We speak exclusively to both of them in this interview, which we'll play out in about 10 minutes from now. But first, let's quickly kickstart the discussion. I have Mr. Santosh Mehrotra. He's an economist, visiting professor at the Center for Development, University of Bath. Thank you very much for joining us, Professor Mehrotra. Before we get into a political slugfest, I want to understand from you so that you can put this in the correct perspective. What does the drop or the free fall in the value of the rupee mean for the economy? In layman terms. In layman terms, at a time when oil prices are already rising and the government is determined to keep its own taxes on petrol and diesel high, it's going to raise inflation rates a little bit more, unless, of course, the government gives some relief through taxes. Having said that, please remember that a falling rupee helps our exports. Please also remember that thanks to this government's policies, merchandise exports, goods exports had fallen from a 2013-14 level of $315 billion sharply every year for 5 years. And a very important reason why that was the case is because the effective exchange rate of the rupee was strengthening in real terms. Now, the reason why it was strengthening was something the government was, giving itself kudos about, that, oh, we have become a favored destination for foreign direct investment. Oh, look, foreign portfolio investors are flooding our capital market with dollars. Well, there is always a downside to these sorts of things, and which is the following, that if you get too much dollars than you are able to absorb, it actually strengthens your exchange rate, meaning strengthens the rupee, in which case your exports don't rise. You won't believe this. The rupee real effective exchange rate for 20 years was stable until 2014. This government allowed it to appreciate. So now what is happening is a natural depreciation, a slow depreciation. I don't think there is a sudden, crash or any such thing. If anything, it will be good for the economy. But it will also mean that inflation will go up, but because the government is not willing to give any relief to the ordinary people. And then perhaps the government may feel the need to come up with another emergency policy of increasing the repo rate
like Mr. Shaktikanta Das did earlier, to control or contain the inflation. Quite right. Okay, let me now go across to Mr. Sukhpreet Singh, leader of the BJP, and Anuj Atre, leader of the Congress party. Thank you very much. The point is, Mr. Singh, I hope you realize that all the tall claims that you made, or the Prime Minister made when he was not Prime Minister, when he was attacking Dr. Manmohan Singh for the state of the Indian economy, I guess those videos have made you look politically as a laughing stock. The picture is very different from that time. Today, the war is going on. Impact of the war through, continue war, Russia and Ukraine war, which is having very great impact on crude oil prices. And, it is the basic reason of, fall of Rupee. More or less, there is no, said by Mehrotra, I'm completely agree with Mr. Mehrotra when he said that, it has a very good impact on export also. Within 1 year, import. While that may be true, but the point is politically, how do you explain this to the common man when inflation will rise, when the price of essential items at home, the food bill at home is going to rise, petrol prices are going to rise? How are you going to explain? Or do you feel that there are more than enough diversions available at the disposal of the central government that people will not care? Sanket, impact of COVID was also there. People knows everything. That repo rate during that COVID was 4%. It helps the people. You see, Mr. Singh, can I tell you something? You're saying, oh, there was COVID, what could we have done? Oh, there is war, what could we have done? Oh, there was a slowdown, what could we have done? I mean, you asked this question of the Congress. I'm sorry to say, but there was recession in 2008, 2009 also. Sir, that recession and between COVID is totally, it's a very different. A common man never think of COVID. Everybody knows that how Mr. Modi and BJP government handle COVID and given, Okay, Anuj Atre, I want to bring you in right now. Mr. Singh says that there is absolutely no comparison between what the state of the economy was and the circumstances that existed when you were in power versus the circumstances that exist right now. There's absolutely nothing that can be done in these circumstances. Anuj Atre. Seems he's frozen. Yeah. Okay, we seem to have lost Mr. Anuj Atre's line, but... at the Congress time, the corruption was the reason. Yes, Mr. Atre, please carry on. Yeah. During the Congress time, corruption was the reason, basic reason of, every, rupee fall. Right now, the impact of COVID and crude oil prices and moreover, basic idea of the economy, there are lots of, good thing is that export is moving. Within 1 year, 46.49% is higher in, Professor Mehrotra, I want to bring you in here. You have heard the arguments that Mr. Singh is making. He looks at a silver lining here. Maybe it is true. But he says the circumstances were such that there was very little that a government could have done. As a subject expert, I want to ask you, do you think that this statement finds its basis in fact? No, of course not. First of all, the RBI was behind the curve in raising rates. The point is that we've known for several months the Federal Reserve is going to raise rates and capital is going to flow out. FIIs, foreign institutional investors, are going to pull money out of here, right? And that's not surprising because now rates are going to increase in the US and money is flying to safer havens. India is a relatively unstable market.
That's the reason that 1.3 trillion rupees went out almost in a day. So this was inevitable, and unfortunately, our inflation rate is going through the roof. As it happens in Europe or North America also, they're suffering from data inflation, but they're suffering from inflation because they revived their economy. Demand has really perked up. In our country, demand has not revived. Yes, the economy has just gone back. That's an important point being made. Anuj Atre of the Congress party, I want to bring you in here. You see, a political argument was made by Rahul Gandhi where he said that the bulldozer has actually been used on the economy, and the country's financial state of affairs are in the ICU. Now see, statements like this of the rupee in ICU and all those things were statements I clearly and distinctly remember in 2012 and 2013 used against the Manmohan Singh government, despite him being an economist. How do you answer or reply to the point that Mr. Singh is making, that this time around the circumstances are very different from what they were in UPA 2? What is your response going to be? The circumstances were very well known to Narendra Modi when he took the charge in 2014, and he had promised to the country that he will bring down the rate of dollar to 35 rupees per $1. Can Mr. Singh let us know on any day that the dollar cost has gone below the rupee prices? In any one day, rupee has gone stronger in any one day. और इससे ज्यादा वर्स्ट क्या हो सकता है कि आज 77 रुपीस पर डॉलर पहुंच गया है, और आज ये बोलते हैं कि जो है ये यूक्रेन वॉर और रशिया वॉर का इसका इम्पैक्ट है। ये वॉर जो अगेंस्ट हमारी इकोनॉमी के चल रहा है, ये तो 2014 से चल रहा है, जो राहुल जी ने कहा है, जो बुलडोज कर दिया इंडियन इकोनॉमी को। ये राहुल जी को कंटिन्यूअसली हमारी इकोनॉमी के ऊपर एक बीजेपी का कंटिन्यूअस वॉर है, कंटिन्यूअस डेंट है जो इन्होंने मारा है, जिसका रिजल्ट ये हुआ है कंटिन्यूअसली डॉलर का प्राइस जो है बढ़ता गया, रुपीज का प्राइस जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए, जैसे मोदी जी ने कहा था कि जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह डॉलर करता है या डॉलर का रेट बढ़ रहा है या रुपए की रेट घट रही है, तो इसका जवाब दीजिए। यूक्रेन वॉर तो अभी लास्ट 70 डेज से हुई है, पहले बताएं कौन सा हमारा एक there are crises in Asian market. You cannot compare that. At that time, there was nothing like this. There was nothing COVID. आप कंटिन्यूसली कंट्री को बेचने का कोशिश कर रहे हैं। आपने कहा था मैं giving free medicine to people, करके अपना पैसा खर्चा चला रहे हैं। आप रिजर्व बैंक का रिजर्व फंड यूज करके पैसा आप cannot compare that. Okay, gentlemen, Professor Mehrotra, Mr. Singh, as well as Mr. Atri, we've heard your point. Mr. Singh says that these are circumstances unique. These are circumstances peculiar. Professor Mehrotra and Mr. Atre say that no, absolutely not. This political aspect of this debate is only going to continue in the few days from here on, perhaps even months if you believe economists. But a more detailed analysis with top experts, what do they think? Please keep watching NDTV, as we are going to get you all the latest as far as the state of the economy is concerned. Because the situation, as many experts are saying, could be very, very alarming. All right, moving on now to our next story. We interviewed the Rana couple, Navneet as well as Ravi Rana. They were in the national capital. Remember, they were jailed, and after about 2 weeks, they, under very strict conditions, got bail. One of the conditions was that they should not speak to the media about the case or even otherwise, and that condition they seem to have violated. They came to New Delhi. They've spoken to the media. They've given us an interview as well. They are going to be here for about a week. What explains their defiance? What gives them this confidence that they can brazen this out? Let's find out in this interview. तो इस वक्त हमारे साथ हैं नवनीत राणा। आपका बहुत बहुत स्वागत एनडीटीवी में बात करने के लिए। लेकिन मैं थोड़ा सा चिंतित हूं क्योंकि कोर्ट का आदेश ये है कि आपको बेल इसी आधार पर मिला कि आप बात ना करें, और यहाँ आप बात कर रही हैं और मैं बात भी कर रहा हूँ। कहीं आपके चक्कर में मुझे जेल ना हो जाए।
महाराष्ट्र में होते तो शायद आपको भी हो जाता। जिस तरीके से कोई क्राइम नहीं करने पे भी देशद्रोह जैसा ऑफेंस मेरे पे दाखिल हुआ है। आप दिल्ली में तो आप सुरक्षित हैं, हमारी केंद्र सरकार है, वो किसी भी जो कुछ नहीं किया उस पर कार्रवाई नहीं करती है। तो इतना विश्वास लेके चलिए कि आप दिल्ली में सुरक्षित हैं हमारे केंद्र सरकार में। और आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, कोर्ट ने जो आदेश दिए हैं पर्टिकुलर वो सब्जेक्ट पे मैंने बात नहीं करना चाहिए, और पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे मैंने कोई भी बात नहीं की है। मैंने जो भी ऑर्डर उन्होंने दिए उसका मैंने पूरा पालन। और टॉकिंग अबाउट हनुमान चालीसा, आप राणा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपका भी बहुत स्वागत। आप दोनों पर ये एक बेल ऑर्डर में साफ साफ था कि आप इस मामले से जुड़ी हुई बात नहीं करेंगे, मीडिया से ही बात नहीं करेंगे। और यहाँ मैं देख रहा हूँ आप जब दिल्ली आए आपने तमाम लोगों से बात की। हाउ डू आई अंडरस्टैंड दिस डिफाइंस? ये एकदम से 2-3 दिन में आप दोनों को ऐसा क्यों महसूस हुआ कि अब बात करनी चाहिए? नहीं, जिस तरह से न्यायालय पे हमारा पूरा विश्वास है, न्यायालय ने जो आदेश दिए उसका हम पूरा पालन कर रहे हैं। कहीं भी हमने न्यायालय ने जो आदेश दिया है उसका उल्लंघन किया नहीं है। पर जिस तरह से हम 13-14 दिन जेल में रहे और एक महिला के ऊपर जिस तरह से अत्याचार होता है, जो दलित महिला है, मागास वर्गीय महिला है, और जिस तरह से मुख्यमंत्री के आदेश से जो पीड़ा पहुंचाई है नवनीत राणा को और मुझे भी, उसकी पूरी कहानी जो बात है जो हमने पब्लिक के सामने रखी। संविधान ने हमें जो अधिकार दिया है, लोकतंत्र ने अधिकार दिया है, हम कोई भी टिप्पणी जो हमारे न्यायालय ने दिया है आदेश, उसकी कोई भी हमने उल्लंघन किया नहीं है। पर लोकतंत्र के हिसाब से हमारी बात रखना, हमारी न्याय की गुहार करना, ये हमारा कर्तव्य है। और वो गुहार हम बार बार मीडिया के सामने बोल रहे हैं। हमें जो जिस तरह से, जिस शूर राजनीति से एक अहंकारी मुख्यमंत्री ने जिस तरह से हमें पीड़ा पहुंचाई है, वो पीड़ा हमारी बोल रही है कि एक लॉकअप के अंदर एक महिला के साथ किस तरह से बर्ताव किया जाता है। उनको एडमिट करने के लिए बार बार वो मांग करती है, उसको हॉस्पिटल एडमिट किया नहीं जाता है। जिस तरह से लॉकअप के अंदर डालने के बाद बिछाने के लिए शतरंजी दी नहीं जाती है, पानी दिया नहीं जाता है। वहाँ पे जहाँ पे जेल के अंदर जेल प्रशासन बोलता है कि मुख्यमंत्री का बहुत प्रेशर है, हम आपको कोई सहयोग कर नहीं सकते। अगर एक महिला को जेल के अंदर अंग्रेज़ों के ज़माने में जैसे कैदियों के साथ ट्रीटमेंट की जाती थी, अंग्रेज़ों का ट्रीटमेंट जैसा ट्रीटमेंट उनको वहाँ पे दिया गया है, तो मुझे लगता है ये महाराष्ट्र में अगर बाला साहब ठाकरे आज होते तो महाराष्ट्र में कभी नहीं होता। कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे जो हमारी हिंदू संस्कृति है, हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करने वालों को अगर राजद्रोह का गुना दाखिल करते, एक महिला को रोकने का काम किया है। महिला को उद्धव ठाकरे डर चुके हैं और डरने के कारण वो बौखला के उन्होंने इस तरह की गंदी कार्रवाई, शूट कार्रवाई नवनीत राणा के साथ की है। जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जैसे राणा जी अभी बता रहे थे कि बड़ी विभत्स सी स्थिति का वो उल्लेख कर रहे हैं, आप बताना चाहेंगे कि ऐसा क्या था जो आपको लगता है कि नहीं होना चाहिए था जब आप लॉकअप में? मुझे लगा है मेरे पे ऑफेंस ही दाखिल नहीं होना चाहिए। आज मैं किस देश में रह रही हूँ जहाँ पे हमारी संस्कृति, हमारा धर्म जो हमें सिखाता है उसका प्रचार प्रसार नहीं कर सकती। आपने कहा कि हनुमान चालीसा का मैं नाम नहीं ले सकती। अगर ऐसे हमारे पर दबाव डालेंगे और हम पॉलिटिशियंस, अगर हम लोगों की सेवा के लिए अगर हम मीडिया के सामने नहीं आएंगे, अगर मैं आज खुद के लिए लड़ाई नहीं लड़ पाई तो मैं आपको कैसे न्याय दूंगी? नवनीत जी, देखिए ऐसा है, एक होता है हनुमान चालीसा एक भक्ति भाव से पढ़ना। आरोप ये है कि हनुमान चालीसा का राजनीतिकरण हुआ कि इधर आजान बजेगी, उधर लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा बजेगी। आप पर आरोप ये है कि आपने राजनीतिकरण किया है हनुमान चालीसा। मुझे लगता है कि मैं हनुमान चालीसा और संकट मोचन को कब याद किया जाता है? जब संकट आता है हमारे ऊपर। मेरे महाराष्ट्र पे इतना बड़ा संकट है कि मुख्यमंत्री वहाँ के 2 साल सीएम ऑफिस कार्यालय में नहीं जाते हैं, तो हमारा पूरा महाराष्ट्र संकट में है। तो संकट मोचन को याद करना कोई गुनाह नहीं है और उसका राजकारण हम कर नहीं रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ लिया होता, ये हमारी आस्था है, हमारे विश्वास है हनुमान चालीसा में और संकट मोचन में, मुझे लगता है वो संकट कहीं ना कहीं दूर होने के कहीं ना कहीं चांसेस थे। और महाराष्ट्र, लेकिन ये राजनीतिकरण की मैं बात कर रहा हूँ। आपने देखा वहां पर एक तरफ एमएनएस, एक तरफ आप दोनों, ऐसे लग रहा है कि बड़े सुनियोजित तरीके से। और अब एक आरोप ये भी लग सकता है कि बेल ऑर्डर के होने के बावजूद अब आपका इस तरीके से आना, भी आप ओम बिरला से भी, स्पीकर से भी मिले,
सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर आप बताना चाहें क्या बातचीत हुई ओम बिरला जी से, क्या आपने उनको बोला? ओम बिरला जी हमारे वो सभागृह के चेयरपर्सन हैं और उस सभागृह की मैं मेंबर हूँ। मेरा पूरा कर्तव्य बनता है, दायित्व है कि उनको आके डिटेल बताना मेरे साथ क्या हुआ, किस तरीके से पुलिस स्टेशन ले जाया गया और मैं किस काम से आगे जा रही थी, लॉकअप में किस तरीके से मेरा व्यवहार मेरे साथ किया गया, जेल में किस तरीके से मेरे साथ बिहेव किया गया। हेल्थ इशू 27 को बताने के बाद, डॉक्टर के लिख के देने के बाद भी मुझे हॉस्पिटल चेकअप के लिए नहीं लेके जाया गया। पूरी डिटेल वाइज दी और किसके ऑर्डर के अंडर भी काम हुए वो पूरी डिटेल के साथ उनको बताई और 23 तारीख को प्रिविलेज के सामने मेरा स्टेटमेंट होगा और उसमें पूरी डिटेल फिर मैं उनको दी। बट यू नो यू हैव बीन समन्ड बाय द कोर्ट इन दिस पर्टिकुलर केस। 18 मई को आपको वहां जा करके सी आई टेल यू वन थिंग, हमने कोर्ट का कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं किया। कोर्ट का रिस्पेक्ट ये हम बचपन से ही सुनते आए, करते आए और आगे भी करते। उसी बेल ऑर्डर में ये था कि आप मीडिया से बात नहीं करेंगी और इस मामले का जिक्र नहीं करेंगे, वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे नहीं करेंगे। हाँ। वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट तो हनुमान चालीसा की बात कर रहे हैं। हनुमान चालीसा 14 दिन हमें जेल में रखा है, 14 साल भी रखा, तो हम हनुमान चालीसा रोज सुबह शाम पढ़ते। हमारे रग रग में खून खून में हनुमान चालीसा है। बजरंगबली का नाम हम लेके शुरुआत करते हैं, श्री राम भगवंता का नाम लेके शुरुआत करते हैं। आपने प्रिजन में तो मुझे लगता है कि वो नाम लेने से, भगवान का नाम लेने से हमें कोई रोक नहीं सकता। पर जो सब्जेक्ट कोर्ट में चल रहा है उस सब्जेक्ट पे कोई टिप्पणी हम कर नहीं रहे। और मुझे लगता है आज उद्धव ठाकरे जी की जो सरकार है, उद्धव ठाकरे जी जिस चेयर पे बैठे वो भाजपा की कृपा है कि नरेंद्र मोदी जी का नाम लेके उन्होंने वोट मांगे। और जब नरेंद्र मोदी जी का नाम लेके जब फोटो बड़ा डालते थे और बाला साहब का फोटो छोटा रहता था, तब जाके इतने एमपी एमएलए उनके चुन के आए। और आज जो सत्ता में वो बैठे मुख्यमंत्री बने हैं, भाजपा के पीठ में खंजीर खुपस के उन्होंने विश्वासघात किया है भाजपा के साथ और वहाँ बैठ चुके हैं। और उसी तरह उन्होंने बाला साहब के विचारों का भी विश्वासघात किया है। नवनीत जी, मैं आपसे ये पूछना था, इज दिस ऑल बाय डिजाइन? और जब मैं डिजाइन शब्द का प्रयोग करता हूं, मेरा ये कहना है कि जब आप बेल के बाद बाहर आए तो फिर आप कुछ समय रुके, बेल ऑर्डर के बारे में आपको पता था, उसके बाद नाउ सडनली स्टार्टिंग टू टॉक अबाउट दिस अगेन, दोबारा इसका उल्लेख करना। आई कम टू दैट पॉइंट अगेन, डू यू थिंक कि वो भक्ति भाव ना लाके और एक राजनीतिक इस्तेमाल हनुमान चालीसा का हो रहा है? और ये सिर्फ महाराष्ट्र में आप पर आरोप नहीं है, ये आप और भी अगर राज्य देखें, उत्तर प्रदेश में भी जगह जगह लाउड स्पीकर बनाम लाउड स्पीकर के बारे में चर्चा होती। मेरा वो सब्जेक्ट नहीं है। उद्धव ठाकरे जो हिंदुत्व के नाम पे आज तक 2 पीढ़ियां उनकी बैठी हैं, तो मुझे लगता है मेरा हिंदुत्व और मेरी संस्कृति, मेरे प्रचार प्रसार मेरे समाज का करने के लिए मुझे कोई पॉलिटिक्स का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। ना ही आज लोकसभा के इलेक्शंस हैं, ना ही विधानसभा के कोई इलेक्शन है और उसका प्रचार चालू है करके हमने ये मुद्दा उठाया। ये मेरा दायित्व बनता है और मेरा कर्तव्य भी, और मैं करूँगी। इट इज़ नॉट एट ऑल डिजाइन बाय समवन, इट इज़ व्हाट आई बिलीव इन। मैं भगवान पे विश्वास रखती हूँ और उसमें बिलीव करके ही यहाँ तक, और खून का पानी किया है मैंने सर इस जगह पे आने के लिए, और उसका पूरा पालन कर रही हूँ। जो व्यक्ति दूसरे के नाम से मुख्यमंत्री बने, उन्हें खून का पानी का मतलब भी नहीं समझता, गली में समस्या क्या वो भी नहीं समझती। सिर्फ मोदी जी के नाम पे 14 और 19 चुन के आए, अब खुद के नाम पे चुन के आके दिखाएंगे, क्योंकि राम भक्त और हनुमान भक्त ने उनकी जगह दिखाएंगे। हनुमान चालीसा, मेरा आखिरी सवाल, हनुमान चालीसा जो है वो आप उसका उच्चारण आप करते रहेंगे भले ही ये? हाँ। मैंने प्रिजन में बैठकर, सेल के अंदर बैठकर हनुमान चालीसा रोज 101 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया। इट टुक फॉर मी 9.5-10 घंटे रोज मैंने वो पाठ किया। और मेरे साथ में जो अंदर और एक्यूज थे, जिनके अंडर ट्रायल वो चल रहे हैं, वो महिलाओं ने अपने अपने प्रिजन में बैठकर, सेल में बैठकर उन्होंने मुझे हिम्मत देने का काम किया और सपोर्ट करने का काम किया कि आप अकेले नहीं, आपके साथ हम भी हैं, अंदर हैं पर फिर भी हम आपके साथ। सवाल मैं आपसे पूछना, अभी आप थोड़ी देर पहले बता रही थी कि दर्द अभी भी है, तो आप बताना चाहेंगी कि मतलब अब ठीक हो रही हैं आप? सी आई टेल यू वन थिंग, कि महिलाओं की आवाज़ दबाना बहुत इजी लगता है, मुझे लगता है ऐसा, बाकी लोगों को ऐसा लगता है। एक तो वैसे ही हम बहुत नंबर्स में कम हैं,
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जगह या विधानसभा में हर हाउस में हमारी गिनती बहुत कम होती है और उसमें एक जरूर माना जाता है कि महिलाओं को दबाना है, या तो चरित्र पे बात कर लो, या तो जेल भेज दो, या तो ऑफेंस डाल दो, इसमें महिलाएं दब जाएंगी। पर मुझे मेरे बाबा साहेब अम्बेडकर ने सिखाया है और लड़ना सिखाया है, डरना नहीं सिखाया है। उसी ताकत के साथ आगे भी बढ़ूंगी। 14 दिन मेरे लिए बहुत कम है, आखिरी सांस तक लड़ना पड़ेगा। फिल्मी अंदाज में आपने एक बार संसद के अंदर पुष्पा का एक वर्जन भी किया था कि मैं झुकेगा नहीं। मैं झुकने के लिए राजनीति में नहीं आई हूँ, मैं लोगों की सेवा करने राजनीति में आई हूँ। और महिलाओं को फूल ना समझे, वो फायर भी बन सकती है और फायर लेके मैदान में उतरी हूँ। इतनी जल्दी तो फायर थमेगा नहीं। थैंक यू वेरी मच टू द रानास। थैंक यू वेरी मच।